अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो इंग्लिश में बहुत सारे लफ्ज़ लोग गलत अदा करते हैं। देर आर सो मैनी वर्ड्स विच आर एक्चुअली मिसप्रोनाउंस्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन आज मैं आपको एक लफ्ज़ बताने जा रहा हूँ जो कि इंग्लिश में सबसे ज़्यादा गलत बोला जाता है। द वर्ड दैट इज़ एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली मिसप्रोनाउंस्ड इन द वर्ल्ड, एंड द वर्ड इज़ this word. How do you say this word? Yes? All right. Abdurrahman, what about you? How do you pronounce this word? Pronunciation. Pronunciation. Umar? Pronunciation. Pronunciation. So there are two ways that most of the people use to say this word. Some say pronunciation and some say pronunciation. And the correct version, the correct pronunciation of this word, I have already told you, it's pronunciation. Pronunciation. It's the way to pronounce words. It's a way to say words. Now, most of the people, they get confused because of the verb of this word, pronounce. As I asked you, how do you pronounce this word? So when we say the verb, it is pronounce. लेकिन जब हम इस लफ्ज़ को अदा करेंगे, we won't say it like pronunciation. It's pronunciation. Pronunciation. I hope you are getting it. If it becomes difficult for you to understand, अगर आप समझते हैं कि यार ये तो बड़ा tough है, तो you can break it down. Like you can break it into 4 different parts, like pronunciation. When you get to the transcription of this word, it is pronounced like pronunciation. 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 अब इस लफ्ज़ की अब pronunciation की pronunciation भाई दुरुस्त कैसे हम करवा, ये तो बिल्कुल इस तरह है जैसे आप एक गूंगे बंदे को कहें कि भाई बोल के बता तुझे मसला क्या है, तो बोलता क्यों नहीं। सो इट्स अ फन फैक्ट कि जिन लोगों को ये मसला है वो भाई बता ही नहीं सकते कि मुझे ये मसला है। हाउ कैन पीपल टेल अस दैट वी हैव प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम व्हेन दे कैन नॉट प्रोनाउंस द वर्ड pronunciation? I hope you like it.